सॉरी वेट करना पड़ा क्योंकि बाय मिस्टेकली 8 o'clock का मीटिंग्स ये हो गया। सो कुछ बात करेंगे आप स्टार्टअप सुधाकर सर। हेलो साहब। यस सर। आप स्टार्ट कर लो साहब। बात करने का। चलेगा ना। यस। सो वी आर ट्रांसलेटिंग, डोंट वरी। मैं मुंबई से विजय कुमार फॉर वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, specialist in plan concepts and combinations with also MDRT planners. Till date, 600 plus agents are qualifying MDRT, COT and TOTs. Till date, 55,000 plus agents are trained in all India level. 55,000 plus. एंड मेरा एक्सपीरियंस ये है कि प्रैक्टिकल बात करो जो भी है। आपको अभी जस्ट आई वाज आस्किंग फॉर वांट टू कंप्लीट फॉर योर एमडीआर, कंप्लीट करना है। एवरीबॉडी टॉक टू एमडीआरटी एमडीआरटी एमडीआरटी, तो मैं एमडीआरटी का प्रोसेस सिखाता हूँ। तो वॉइस आ रहा है एवरीवन? वॉइस इज क्लियर सर? वॉइस इज क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर, वॉइस इज क्लियर, डोंट वरी। एमडीआरटी करना है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, दैट्स व्हाई आई टॉकिंग टू यू, डोंट वरी। एच एन आई सेगमेंट्स का एक बेस्ट प्रोग्राम है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। वी आर ट्रांसलेटिंग ऑन दिस कंसेप्ट, डोंट वरी, बट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर फास्टैग एमडीआरटी ग्रुप फोरम for this special session for only for conceptual selling and combinations. So कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ अलग होना चाहिए, ये मेरा मानना है। 17 states I visited, 175 plus cities I working, last 22 years my experience. So जो बात करूंगा प्रैक्टिकल करूंगा आपके साथ। Sir, good morning. Myself from Vijay Kumar. I am calling from LIC of India. Customer says not interested. आता है? Everyone? Customer says no, I don't want receipt, right? So ये चीज ऐसे ऑब्जेक्शंस बहुत से आता है। ऑब्जेक्शन, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। कस्टमर से मेरा भाई एजेंट है, आई डोंट वांट परचेज द पॉलिसीज। मेरा दोस्त एजेंट है, मैं उससे परचेज कर लूंगा। इन ऑफ द पॉलिसीज बहुत सारा चीज आता है। फिर क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया सर, विजय कुमार हियर सर। पॉलिसी लेने के लिए आपको बात करनी थी यार, नहीं चाहिए करके। डिमोशन इसी वजह से आता है कि यार लोग मना कर देते हैं। लोगों का अधिकार है। द पीपल सेज नॉट इंटरेस्टेड, द पीपल सेज नॉट इंटरेस्टेड, दे वाज राइट। व्हाई? उनका अधिकार है, इट्स द राइट्स ऑफ दिस से दे नॉट इंटरेस्टेड। मेरा काम है प्रेजेंटेशन। यू आर नॉट अ सेल्समैन इन LIC, you are a presenter in LIC. You are a presenter, you are an advisor in LIC. You present LIC present plan presentations. You present LIC for why purchase the LIC. लोगों को समझाना है कि तुम्हारे परिवार के लिए LIC का जरूरत कितना अच्छा है। मैं बीच बीच में आपको हिंदी यूज करूंगा, उसका ट्रांसलेशन करना है तो यू कैन टॉक विथ, नो इशू, बट अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। सो एमडीआरटी एमडीआरटी एमडीआरटी, every time says people for MDRT, MDRT, MDRT. What is MDRT? MDRT is not a small category. MDRT is a degree of LIC. LIC का सबसे पावरफुल चीज है, is a international recognition degree. The international degree for a LIC. Just wait, huh? Right now, voice is clear. Is clear? Okay, everyone. I was purchased this instruments for today's, and I was trying for this meeting. So voice is clear? Okay. मैं ट्राइंग कर रहा था लैपटॉप के साथ अटैच करने का। जस्ट वेट, नो इशू। सो एमडीआरटी करना है तो एमडीआरटी वाज अ डिग्री, जैसे जस्ट फॉर डॉक्टर कंप्लीट फॉर हिज डिग्री, डॉक्टर कंप्लीट फॉर हिज डिग्री, सीए कंप्लीट फॉर हिज सीए, lawyer is complete for lawyer. So that's why LIC agent is completing for MDRT is a life goal. वो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर MDRT नहीं हुआ तो जिंदगी में कुछ नहीं हुआ।
LIC का एजेंसी में एक बार इम्यूनिटी होना चाहिए, एक बार। अगर कर लिया तो जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, ये मेरा मानना है। और इम्यूनिटी करना मतलब क्या, एक बार नहीं करना, जिंदगी भर इम्यूनिटी करना, तो उसका मजा बहुत अलग आता है। एक ऐसा सिस्टम होता है कि इम्यूनिटी एक बार नहीं, हजार, हर साल, हर टाइम इम्यूनिटी अगर करते जाओगे तो जिंदगी बहुत सुनहरी बनेगी। सो कंप्लीट फॉर योर इम्यूनिटी। आपको लगता है यू वांट कंप्लीट फॉर योर इम्यूनिटी, यस और नो? चाहिए, करना चाहिए, मेरे को इम्यूनिटी बनने का है। होता नहीं है। सर 5 लाख का कमीशन कमा लिया, ये साल इम्यूनिटी रह गया। सर 2 लाख का कमीशन कम पड़ गया, सर इम्यूनिटी रह गया। सर करने का कोशिश करता हूँ बट होता नहीं है। वाई? सर बहुत सारा दिक्कत है। करने के लिए जिस दिन सोचते हो उस दिन सबसे बड़ा तकलीफ है, भगवान आपके साथ खड़ा होता है लेकिन मुश्किलें भी आपके साथ आना शुरू हो जाती है। लोग कहता है सर इमडीएटी 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 करो, इमडीएटी ब्रांच में जाओ, ब्रांच मैनेजर कहते हैं इमडीएटी करो, डीओ सर के पास जाओ इमडीएटी करो, सीएलए मैनेजर के साथ जाओ इमडीएटी करो, ये दोस्त बोलता है इमडीएटी करो, वो ट्रेनिंग में जाओ इमडीएटी करो। इमडीएटी मत करो, इमडीएटी का प्रोसेस करो। व्हाट इज अ प्रोसेस? इज अ कंटिन्यूशन ऑफ इनकम, इट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ योर लाइफ अचीवमेंट्स। वो प्रोसेस होना जरूरी है। एमडीआरटी ऑटोमेटिकली होता है, एमडीआरटी सीओटी टीओटी। वन ऑफ द गाय इन आई थिंक सिंगापुर, he was completing 365 days MDRTs, 365 days, every day he was completing MDRT every day। क्या अच्छा है ना यार। one of Hyderabad agents was completing approximately 156 MDRTs in 1 year। अच्छा है ना सर, they was very high people। ऐसा कुछ नहीं है, इमडीएटी करना एक सपना है और वो करने के लिए उतरना वो जज्बा है। Every time you can think about that, complete my MDRT, so you can do it, no problem। What is the premium? 40 lakh rupees premium you needed and 10 lakh rupees commission. It is a pure MDRT, yeah? Not for the including bonus and in everything। I was talking about the pure MDRT। कैसा है? 40 लाख का प्रीमियम लाना है, 40 लाख रुपीस का प्रीमियम, 10 लाख रुपीस का कमीशन आना ही चाहिए। और बोनस कमीशन इज योर एक्स्ट्रा अर्निंग, is for your MDT expenses. Your MDT expenses. More than 3 lakh rupees you can earn for the extra 10% of commission. So he was expenses for your foreign trip. But 10 lakh rupees purity commission for 25%. So 10 lakh rupees you can earn. 40 lakh rupees your premium and 10 lakh rupees for your commission, you become MDRT। MDRT is a easy chapter, not a कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं पा सकता है, कर नहीं सकता है। Every time become MDRT। It is a practical practice make a miracle। Every time presentation देने से MDRT हो सकता है। So you can think about that। Just like for that, you have your parents। आपका घर में बड़ा कोई बुजुर्ग है या आप खुद हो, योर एज इज 30, 35, 40। सर यू आर परचेज द पॉलिसी, सो दिस नहीं, अभी नहीं किया है सर। क्या कैटेगरीज होता है पॉलिसी सेल करने का? सर यू 1 साल के बच्चे के पास आप जाओ, सर आपको पॉलिसी लेने का है, वो बच्चा बोलेगा मेरे को पॉलिसी क्यों चाहिए गया, आई डोंट नीड द पॉलिसी। 1 साल से लेके बच्चे को, 5 years तक बच्चे को दे नॉट नीडेड। 10 साल के बच्चे को नहीं, दे नॉट। 10 साल का चाइल्ड इंटरेस्टेड ही नहीं है। 18 साल का बच्चे को पॉलिसी, सर कमाने कहाँ लग गया हो। 25 के बच्चे के पास अगर जाते हैं, सर पॉलिसी यू परचेज द पॉलिसी पर LIC, सर अभी तो जॉब लगा है, कहाँ पॉलिसी का बात करते हैं आप सर। फिर 30 एज के बंदे को, सर शादी हुआ है, अभी काम करने का है। काम क्या, अभी शादी तो हुआ है, थोड़ा एंजॉय करने दो लाइफ को। 35 का, सर बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, अभी जस्ट छोटे हैं, थोड़ा बड़ा होने दो, मैं पॉलिसी करता हूँ। 40 years, 40, 40, सर करना है LIC, करना पड़ेगा मेरे को। एंड अबो 45 पर्सन, यू टॉक विद सर, मैं LIC से बात करता हूँ, सर मेरे को LIC करने का है, 2 दिन के बाद कॉल करना, मैं आके मिलता हूँ करके। एंड 50 एज ऑफ 50, सर आपका ऑफिस किधर है, वेर यूर स्टे, वेर यूर ऑफिस, आई एम कमिंग फॉर देयर एंड आई वांट अ पॉलिसी। व्हाई? सर 50 के बाद हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वो ब्लड प्रेशर, वो सब बीमारी लग जाता है। फिर 50, 55 का पर्सन को कॉल करो, सर मेरे को LIC से बात करो, आपको LIC का पॉलिसी चाहिए। हाँ सर इंटरेस्टेड है, कभी मिलने का है।
मेकअप का उम्र में पॉलिसी लेगा तो अच्छा है, नहीं तो चेकअप के उम्र में पॉलिसी मिलता नहीं है. So purchase the policy age is maximum 18 years to 40 to 45, not more than, because IRD was declared for above 45, any person purchase the policy, get the medical report. Not only for LIC, all of companies, 28 life insurance companies give the circular, 45 and above age, 45 and above age, compulsory to the medical. If you sell the 25,000 sum assured policy, you get the medical. Why? Above 45 diabetes है, blood pressure है, hypertension है, so they was rejected. If somebody was asking for you, sir, I want a policy, and he age is 48, 49, दाल में कुछ काला है. सर यू आर राइट, बट क्या है ना, ऐसा एज का लोग हमारे पास है, दे डोंट वांट परचेज द पॉलिसी. इनको म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा लगता है. आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट ऑन म्यूचुअल फंड, डोंट वरी. आई एम टॉकिंग अबाउट सम concepts how to approach for the clients. Sir, good morning, sir. Myself Vijay Kumar. I'm calling from LIC of India. I'm not interested. Sir, LIC का पॉलिसी बेचने के लिए कॉल नहीं की है. But just I have information for you. Sir, what is the information? Sir, LIC was giving the crorepati plan for you. Are you interested with me? If you're interested, give me the 10 minutes. Simple सा बात है. Sir, good morning, sir. Myself Vijay Kumar. I'm calling from LIC of India. I was giving to you specially crorepati बनने का plan. अगर interested है, so I want to meet to you 10 minutes. That's simple. मिलना है, बात कर, कोई टेंशन नहीं है. Because my LIC agent is the biggest LIC agent in all over it. Because my LIC is the number one position in all India level. Number one position. So टेंशन लेने का नहीं है. पॉलिसी नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपना पॉलिसी वही लेगा जिसका नसीब में आपका साथ रेखा है. आप कर्म पे विश्वास करो. कर्मण्यवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन. Every day give the presentation, every day give the presentation, every day give the presentation. One day you become MDRT. Not one day you become MDRT. Continuous process for your working. That's your call for the MDRT. करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा. Do it is practical. That's done it for your MDRT. No problem. Everything is possible. Nothing is possible. ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कि नहीं हो सकता है. Everything is possible. You small village, you stay in small village, छोटा सिटी में है, छोटा गांव में है, कोई दिक्कत नहीं. गांव गांव से बड़े बड़े रति महारथी निकलते हैं. So that's simple talking. That's simple. So we are closing for the concept. Simple. Sir, you want a 3 crores for your next 3 generation projection? आपका 3 पीढ़ी के लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं. आप लेने के लिए तैयार हो, बोलो. सर मेरा LIC में, सर गुड मॉर्निंग, स्पेशली माय LIC वाज गिविंग टू 3 जनरेशन प्लान फॉर 3 crores प्री मैच्योरिटी प्लान. आर यू इंटरेस्टेड? तो दिस सर क्या प्लान है वो पहले समझा. सर यू गेट द 3 crore rupees to your all 3 generations. 3 crore rupees, huh? Not 1 crore. You give the 3 crore rupees for your all 3 generations. First generation for father. Only for saves 252 rupees per day. Approximately 25 years you save. One of the questions, more agents are asking to me. वो बहुत पूछते हैं, सर 25 साल का पॉलिसी है, 25 years. वो बोलते हैं सर 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का पॉलिसी लेगा. कस्टमर वाज आस्किंग, सर 15 years का पॉलिसी है तो बताना. सर 10 years का पॉलिसी LIC का तो बताना. एक बात समझ में नहीं आती, LIC से डर क्यों लगता है लोगों से. लोगों को डर लगता है LIC लेने से मेरे को कुछ हो जाएगा. अरे LIC लेने से डर, तुमको कुछ नहीं होना, उसके लिए LIC नहीं करना है. तुमको कुछ अगर गलती से हो गया तो तुम्हारा परिवार को देखने के लिए LIC है. LIC कहता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. आज के लिए नहीं है, तुम्हारे पूरा जिंदगी, पूरा परिवार का केयर करने के लिए मैं LIC है. LIC आज तुम सोचता है LIC नहीं करने का है, LIC तुम्हारे लिए थोड़ी करने का है. somebody एजेंट क्वेश्चन करता है, सर LIC कस्टमर के लिए करना है या उसका परिवार के लिए करना है. आई वॉज क्लियरली गिव दिस स्टेटमेंट, कस्टमर के परिवार के लिए करना है.
आप बोलेगा सर मैच्योरिटी पे तो मिलता नहीं है, आप कहेगा सर ऐसा थोड़ी, अगर बात करेगा कस्टमर पॉलिसी नहीं लेगा, अरे कस्टमर को पॉलिसी लेना ही पड़ेगा। व्हाई? क्योंकि वो इतना कार्यक्रम करके रखता है। अभी कार्यक्रम का मीनिंग आपको बताता हूँ। ही वॉज टेकिंग द हाउसिंग लोन, he was taking housing loan, he was taking personal loan, he was taking personal finance, he was taking any other car loan. So that's why ये कार्यक्रम किया हुआ है उसने। तो इसका पैसा कौन देगा? नॉट गिविंग द फैमिली मेंबर्स। ये कल चला गया मॉर्निंग में, समथिंग इज एक्सीडेंटली जा सकता है, अटैक आ सकता है, एनीथिंग, एनी इश्यूज, और मॉर्निंग में चला गया, तो ये जितना भी इसने बना के रखा था देगा कौन? So that why you purchase the LIC policy for your liability and your family. That after you can purchase for yourself, no problem. I'm clearly giving you. So 3 crore rupees for your family generations, 250 rupees per day, and most of the powerful 25 years, you not sell the policy for 15 years and 20 years. You not sell the 15 years, 5 years, 10 years policies. Why? 10 साल का 15 साल का पॉलिसी नहीं बेचने का पापा। Why? My LIC agents were surviving the last 35 years. Why was my LIC was giving the 35 years table in 914 and 915? क्यों दिया है 914 900 914 और 915 में 35 years का term? Why? Why LIC was giving that 100 years for जीवन उमंग policies? Because LIC क्या चाहता है मालूम है? आपके साथ हम जिंदगी भर काम करें। आज के लिए नहीं काम करने का, 10 साल के लिए नहीं करने का बाबा। तू जब तक जिंदा है तब तक तेरे लिए काम करते रहे, यही मेरा एलआईसी का उद्देश्य है। इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर। बीमा अगर का विषय वस्तु लेना कोई नहीं चाहता है। सो दैट यू आर टॉकिंग सर 25 इयर्स का पॉलिसी है। और पहले सोचिएगा 25 इयर्स, सो मेनी लॉन्ग्स, क्या करेगा सर? सो डोंट वरी, 25 इयर्स है, ऐसे ही निकल जाएगा। बट यू कैन परचेज द 25 इयर्स। व्हाई? बिकॉज एलआईसी का पॉलिसी जितना लंबा होता है, जितना लंबा होता है उतना उसका रिटर्न अच्छा रहता है और प्रीमियम कम रहता है। एलआईसी का पॉलिसी जितना शॉर्ट टर्म है उतना उसका प्रीमियम ज्यादा रहेगा और उसका रिटर्न कम रहेगा। यानी गंगैया सर इज राइट नाउ इन मीटिंग। गंगैया सर, एनी ऑर्डर? यस, ओके। गंगैया सर, आई वाज आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ। जो जो छोटा छोटा स्टेटमेंट है वो उसको ट्रांसलेट कर देना आप। ओके सर, ओके सर। ओके। So 250 rupees per day for approximately 1 lakh rupees, you can pay the premium 1 lakh and above, 25 years, and get your father, first of the first generation father, get, just like for me, myself Vijay Kumar, I was purchased this policy and get the maturity on time. 18 lakh rupees is a tax-free maturity for me. For me is a first generation. Second generation, my son was getting 1,20,000 after 25 years for lifetime pension. After lifetime pension, मैंने क्या लिया? 18 लाख रुपीज आई वॉज गेटिंग द मैच्योरिटी ऑन मैच्योरिटी टाइम 25 years आफ्टर, 25 साल के बाद, 25 years के बाद। आफ्टर दैट माई सन वॉज गेटिंग एवरी ईयर फॉर हिज लाइफ 1,20,000 लाइफ टाइम। एंड थर्ड जनरेशन, माई grandson was getting 2 crore rupees for value fund, for risk cover fund for my child was dead. मेरा बेटा जब जाएगा सो मेरा ग्रैंडसन 2 crore रुपए लेगा। So approximately total value for 3 generation. First generation is father, he was taking 18 lakh rupees. Second generation, my child was 5 years and he was getting the policy. And after that 30 years, 31 to till that of 100 years, he was getting every year 1,20,000 rupees. 1,20,000 per month is 10,000. After that 31 years, lifetime, and he was die 70 years, 80 years, 90 years, anytime, no issue. So he was die, that time he was getting, as nominee, my grandson was getting 2 crore rupees. It is a very powerful system. A simple table is 933 and 945. Jeevan, Umang policy, child is 5 years,
15 lakh rupees sum assured, getting for 95 years and 25 years PPT. My age is 933, customer age is 930, table is 933, 25 years, 22 years PPT, and 6,80,000 sum assured, age is 30. Average of I was purchasing term rider, so age of equal insurance is calculating, no problem. उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है. Just like a 3 generation program है. 3 generation. That's called 3 generation program. कोई कस्टमर है आपके पास, कोई क्लाइंट आपको बोल दिया, सर बहुत अच्छा है, मेरे लिए और मेरे बेटी के लिए कर दो. You can do it, no problem. Premium not high, आपका प्रीमियम ज्यादा नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रीमियम ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. Something any issues. Customer was purchased the policy for 2 days. आज ले लिया. 10 दिन के बाद, after 10 days, customer was die. What happened? 945 table, you can get the PWB, premium wear benefit, right? उसमें लिया. That's premium wear benefit you can purchase. Life assured is my son. So that policy was continuing. Premium was not paying. First option. Second option, 933 is giving the term rider. Automatically term rider is including. Is not talking about the customer. Sir, term rider लिया है, नहीं लिया, nothing else. Customer को लेन देन नहीं है. Clear? I told you. मेरा LIC एजेंट जो देगा वो अच्छा देगा, उससे बढ़िया देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट है. सो 933, 6,80,000 rupees term rider, some assured is term rider, 6,80,000. Immediately give the nominee. After that, 68,000 rupees yearly, 68,000 rupees yearly, giving the till date of 24 years. Till date of 24 years. And after that, I was giving the maturity of 18 lakh rupees to my son on maturity time. मल्टीपल प्रोजेक्शंस को अप्रोच करके ऑल 3 जनरेशंस का गारंटेड प्रोग्राम तैयार किया. बिकॉज कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंपल ऑफ द कॉम्बिनेशंस क्या होता है कॉन्सेप्ट्स. LIC का सारा प्लान, LIC का ऑल प्लान्स इज वेरी पावरफुल, अच्छा है, सबसे बढ़िया चीज है. एक प्लान के साथ दूसरे प्लान को मिक्स कर दो, एक नया वर्जन तैयार होता है. That's call I was विरासत. That's I call of विरासत. इसको विरासत भी बोला जाता है क्योंकि फादर was purchasing policy for जीवन लक्ष्य for his age and he was gifted for जीवन उमंग for his child. उसके बेटी को उसने जीवन उमंग दिया. So डेथ भी हो जाए फादर का तो भी डरने का नहीं है, पैसा आते रहेगा. अगर नहीं कुछ हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं, बच्चे के लिए जिंदगी भर पैसा आएगा, उसके बाद उसके ग्रैंडसन को पैसा देगा. इतना बड़ा स्टेट क्रिएशन का प्रोजेक्ट तैयार होता है, स्टेट क्रिएशन. एंड वन ऑफ द पॉलिसीज, उमंग इज द बेस्ट क्रिएशन, बेस्ट पॉलिसी फॉर स्टेट क्रिएशन प्रोग्राम. If you purchase the 10 lakh sum assured policy, you create a state approximately 2 crores. You purchase the 1 crore policies, your nominee will get approximately 12 crore rupees. You can calculate approximately 12 crores and above, 12 crores and above. I was calculating that time of one of the presentation in Hyderabad. So that time I was presenting is a joint call. So I was calculating 16 crores customers giving the maturity on 100 years, 1 crore sum assured policies. Itna powerful hai. And we are approaching, last 3 months, we are approaching for that client 100 crore sum assured policies for Jeevan Uman. Itna bada hai na? It is a power of LIC. 3 generation program you can present it. कुछ सवाल है आपसे? All of here, जितना भी लोग अभी बैठा मेरे साथ, सब पेंशन वाला लोग है. एक सवाल है मेरा, आर यू पेंशनर? यस और नो? आपको पेंशन मिलेगा LIC से? यस और नो? एवरीवन गिव द आंसर. Renewal commission is not your pension, huh? Renewal No, sir. commission is not your pension. Renewal commission is your family pension.
not your pension, your family pension. अब बोलेगा मैं रिन्यूअल का आता है मेरे को 1 लाख रुपए रिन्यूअल आई वाज कलेक्टिंग रिन्यूअल कमीशन इज 1 लाख रुपीस पर मंथ इज नॉट योर कमीशन इज नॉट योर अर्निंग इज योर फैमिली आई क्लियर बात करने वाला बंदा हूं मैं राइट सो LIC was providing when gratuity to you yes sir LIC was providing gratuity condition is 60 age you are completed or maximum 15 years you can work in LIC right or maximum gratuity amount is not more than 5 lakhs only for 5 lakhs huh? Only for 5 lakhs not more than right this is the 3 conditions max gratuity amount is 5 lakhs age your criteria is 60 years and your service year LIC in commission 15 years you can work in maximum okay but how gratuity was calculated your age is 60 your age is 60 age how much you can earn the commissions 59 age how much you can earn the commission 58 how much you can earn the commission 57 how much you can earn the commission that calculating about the 15 years is not more than for 5 lakhs if go for more than 5 lakhs so LIC was only giving 5 lakh rupees is under than the 5 lakhs if a calculation of this 3 lakh rupees so LIC giving the gratuity for only for 3 lakh you can read the circular of this project so this is not a guaranteed gratuity amount for yourself अगर अच्छा काम किया 15 साल 15 years सो LIC में ग्रेचुटी अच्छा आएगा वो भी 5 लाख का उसके ऊपर नहीं है LIC was providing a provident fund for you ये क्या बात कर रहे हैं यार provident fund थोड़ी LIC देता है नहीं not ना nobody for provident fund नहीं है I was asking for pension no I was asking for gratuity limited option I was asking for provident fund is optional LIC was providing the medical sir minimum 3 lakh to 5 lakh rupees for family minimum 3 lakh to 5 lakh rupees for family but condition is you are earning agent and condition is you are a club agent right matlab and the medical sir LIC was providing an accidental insurance cover and something insurance cover for you sir not more than for the 10 lakh rupees or 15 lakh rupees not more than for 5 lakhs 10 lakhs and 15 lakhs this is the criteria right so any agree one of the one questions you for filing the ITR every year ITR right you can filing the ITR you go the bank आप बैंक में गया और आपने बोला मेरे को लोन चाहिए कितना दिन में मिलेगा वेटिंग पीरियड लगता है वेटिंग पीरियड you not get the pension you not get the gratuity properly you not get the provident fund you not get the medical service properly you not get the insurance cover you not get the loan anything any years ये 6 points है 6 point है how much pension provident fund gratuity medical insurance and loan you can ask the sir my voice is clear no problem my voice is preferably powerful है Bhaskar sir one of you are having small customer in your neighbor anyone you can ask the auto rickshaw driver you can ask the shopkeeper anywhere any persons he was working in private companies and anywhere his salary minimum 15,000 20,000 rupees his minimum salary 15,000 12,000 10,000 you can ask the 6 questions sir you getting the pension you getting the provident fund you getting the gratuity you getting the loan ability you can getting the medical service you can getting the insurance cover वो बोलेगा क्या किधर से आया पता नहीं है क्या पूछ रहा है I'm asking the powerful questions pension gratuity medical insurance loan ability and these of 6 questions you can ask the customer
Any questions, you can chat with me, no problem. I can answer you, don't worry. If you have any questions, anyone, you can chat with me. I can give the answer, no problem. If related to session, okay? Don't raise your hands. At the question time, I can ask. I told you, don't worry. Please repeat. Oh, sir, already I told you. You can ask the questions. Pension, sir, आपको pension मिलेगा? गंगा sir. बोले बोले सर. Okay, I was repeat. So you can translate in Telugu. Okay. You can ask Okay, the sir. questions. आपको पूछना क्या है? सर आपको पेंशन मिलेगा? सर आपको ग्रेचुइटी मिलेगा? सर आपको लोन अवेलेबिलिटी है? सर आपको मेडिकल फैसिलिटी है? सर आपको इंश्योरेंस कवर है? और आपको लोन ये बाकी का ये 6 पॉइंट्स आपके लिए है. पेंशन, ग्रेचुइटी, मेडिकल, पेंशन, ग्रेचुइटी, मेडिकल, प्रोविडेंट फंड, लोन और इंश्योरेंस कवर ये अवेलेबल है. That you can ask the simple question for the customer. बस. Yes, Ganga sir. మనం కస్టమర్ అడిగిందంటే పెన్షన్ ఉందా మీకు, గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నదా, మెడికల్ ఉన్నదా, ఇవి క్వశ్చన్ అడిగినట్టయితే మన వాళ్ళ నుంచి మనకు జవాబు వస్తుంది. అన్నీ సార్ చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు మనం డైరెక్ట్ పాలసీ అడగకుండా ఇవన్నీ వాళ్ళ క్వశ్చన్ చేసినట్టయితే ఇవన్నీ నాకు లేవుగా తీసుకోవాలనే ఉద్దేశం వాళ్ళకి కలుగుతుంది. అదే చెప్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు. ఓకే సార్. Yes, sir. So that's question, kuch sawal. That's question you can ask. Everybody was not getting the pension. After that 2000, out of that 2006, nobody get the pensions. Provident fund ka lafda chalu hai. Gratuity amounts will not calculating because provident fund amount is not clearly giving the interest rates, not giving the properly interest rates for all of them. Clearly bata raha. एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट्स कितना होगा गारंटी नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, क्लियरली है. सो आगे चल के एलआईसी के अलावा कोई आपको ऑप्शन नहीं है. एवरी वर्कर्स इन द कंपनी, एवरी गवर्नमेंट सर्विस ऑप्शनल्स, जितना भी लोग है, अप्रोक्सीमेटली 80% डेटा इन योर वर्किंग एरिया, they was not getting the pension projections. One of the small story in myself, small story mera. Every month my family was donating some वृद्धाश्रम. हम लोग जाता है, देता है वहां पे donations. That fees is 10,000 rupees per month. 10,000 rupees per month. If 10,000 rupees per month, so 12 months you can get 1,20,000 rupees yearly. सर अगर आपको जिंदगी में पेंशन चाहिए तो आप आज इन्वेस्ट कीजिए जीवन उमंग इधर जीवन उत्सव में. कल का भरोसा नहीं है, आपका बेटा आपको संभालेगा इसका गारंटी नहीं है. ये क्लियरली मैं बता रहा हूं आपको. अगर आपकी इच्छा है कर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दिस मोस्ट पावरफुल फॉर 3 क्वेश्चंस: पेंशन, ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड. इट इज अ मस्ट नेसेसरी बिकॉज एनी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख लो, दे वाज यू कैन आस्क देम, ये 60 में रिटायर हो गया, उसको ग्रेचुइटी का अमाउंट 15 लाख 15 लाख रुपीस रिसीव हो गया, उसको प्रोविडेंट फंड 20 लाख आ गया, उसको पेंशन 25,000 का मंथली आ रहा है, अच्छा हो रहा है. बट उसका पीछे का बैकग्राउंड कभी देखा आपने? यू कैन बैकग्राउंड. He was joining the 25 age. That first salary he was cutting started. पहला सैलरी से चालू होता है उसका 10%, 15%, 10%, 15%, 20% कटिंग होना. First salary. End of that salary, 60 age, he was retired of the last month. He was cutting that his salary. In 35 years, he was investing in that provident fund, gratuity and pension schemes. और अपना एलआईसी का पॉलिसी समझाने जाए, भाई एलआईसी का पॉलिसी 15 साल का है तो बता देना. Your government employee was investing his family for 35 years. बट मैं मेरा एलआईसी लेके जाएगा सर 15 से 15 इयर्स का पॉलिसी है, 20 इयर्स का पॉलिसी है सर, 10 इयर्स का पॉलिसी है तो बता देना. या बाबा, जिंदगी एक दिन का पल का भरोसा नहीं है. और तुम्हारा एलआईसी का रिटर्न अच्छा नहीं है, कौन कहता है ऐसा? मैं ऐसा बोलेगा मेरे को ऐसा पकड़ के मारने का मन करता है. मेरा एलआईसी का रिटर्न अच्छे है. अरे मेरा एलआईसी का रिटर्न इतना अच्छा है ना, तो आज पॉलिसी ले ले, तेरे परिवार को कल 2500 टाइम्स रिटर्न देता हूँ. बोल क्या बोलता है? 2500 टाइम्स.
My LIC was giving interest rate for you 2,500 times. ये आज तक LIC का ऐसा पॉलिसी 2,500 times रिटर्न वाला पॉलिसी LIC में, मालूम है आपको? कंडीशन है, you purchase the policy by today and you go for tomorrow. बोले सर ऐसा बात करेगा कस्टमर चला जाएगा। कस्टमर वही अच्छा लगता है जिसको डर लगता है, उसके फैमिली के हिसाब से उसे लेने के लिए अच्छा लगता है। He was interested. वो लोग अच्छा नहीं है जो बार बार तुमको आने के लिए बोलता है, सर आ जाओ बाद में करता है, आ जाओ बाद में। तुझे करना है आज कर। वाई? कल का भरोसा ना तेरा है ना मेरा है। तू रहेगा तो कर लेना। Somebody customers told you, sir, after that 15 days, we finally is the policy, yeah, finally is the policy. करेगा वो 15 दिन के बाद, 15 डेज के बाद करेगा फाइनल, 1 महीने के बाद फाइनल करेगा। उससे लिख के लेना, सर ये 15 दिन तक जिंदा रहेगा उसका गारंटी है। कल का भरोसा नहीं है, कल अगर न्यूज आ जाए टेलीफोन पे, सर ही वॉज गोइंग टू एन एक्सीडेंट। सो मेनी ऑप्शनल चीज बहुत है अपने पास। एवरी टाइम one of the activity I was doing in Hyderabad, then Sagar है वहां पे, that's why I'm doing this activity. One of the questions, any of 3 members in your family, I was giving this special of visiting card of that project. एक activity मैंने 100 peoples के लिए presentation activity किया था. Any of family member of 3 members, small of the एक question, simple questions. You can ask the customer for simple question. Sir, if something happens with you, anything, any 3 family members you have, for after that your family was taking care. आपका जाने के बाद आपका परिवार का केयर कर सकता है ऐसा 3 व्यक्ति कौन है? You can ask that bindas okay questions. दिल से बात करो. Customers told you, nobody. Some agents, I was doing the activity for last, I think 6 to 7 years before. Or one of the visiting card we are printed for 100 visiting card, and that time we are going every person से मुलाकात करके, मैं खुद था, I'm personally up there, sir, ये आपका फैमिली में 3 मेंबर कोई है जिसका नाम नंबर ये विजिटिंग कार्ड पे लिखो, जो आपके जाने के बाद आपके परिवार का केयर कर सकता है। 100 peoples we are visited on that time. 94 people says not interested. Not interested says nobody can after that me. 94% people say कोई नहीं है बाबा हमारे मेरे जाने के बाद। 6 people are different talking, मतलब वो थोड़ा ऊपर नीचे बात किया, लेकिन 90 out of 100 94 people says nobody can. उसमें से after that 34 policies sales on that one day. 3-4 policies we are sale on that day. Simple of that. Any 3 persons you can ask the questions every time. करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा. Presentation your style. आपका तकलीफ है प्रेजेंटेशन देने का नहीं है. आप प्रैक्टिकल बात करता हूं. हर महीना every month you want to earn for minimum 50 to 1 lakh rupees. चाहिए, सपना है, लेकिन उस सपने के लिए, उस ड्रीम के लिए आप काम नहीं करता है. आप बोलते हैं सर मैं काम कर रहा हूं. एवरी डे मेक 30 कॉल्स, एवरीवन. सिंपल क्वेश्चन. एवरी डे यू कैन डू इट फॉर 30 कॉल्स, yes or no? 30 every day you can make 30 calls every day? No. If you do it tomorrow, you can start 30 calls in every day. After that 365 days you become MDRT. Open challenge for you. Open challenge. Make every day 30 calls. 30. Tomorrow you can start. Make 365 days. After that 365 days, you calculate for your income.
approximately 10 lakh rupees you can cross. Only for I calling up, only for I told you, call, telephone calls, 30 calls. You become MDRT, and you daily for make 100 calls, you become a COT. Complete challenge up. विजय का बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है, विजय कुमार जब बात करता है तो हम 100% बात करता है, क्लियरली बोलता है, ऐसा छुपा के बोलता नहीं, क्लियरली बताता है. यू कैन मेक 30 कॉल्स, you become MDRT. You can make 100 calls in every day, 365 days, you become a COT. Open challenge. I give this signature of 100 rupees stamp paper. For sir, you can start the 30 calls in every day. After that 365 days, you can become MDRT. और अगर नहीं हुआ, तो 10 lakh rupees commission I give you. Open challenge, my friend. First, teach to you only for the how to process. I told you, don't worry. Your MDRT is waste. नन्ही चीटी जब दाना लेके चलती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है. Try, but don't cry. Every time try, give the presentation. You give every time you can give the presentation. Sir, आज नहीं हुआ, कल होगा. आज नहीं हुआ, कल होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा. ये मत सोच के बैठो कि लोगों ने मुझे मना कर दिया. लोगों का अधिकार है मना करना, तुम्हारा काम है समझाना. बिकॉज इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर. बीमा आग्रह का विषय वस्तु है, लेना कोई नहीं चाहता है, समझाना पड़ता है. सर, गंगया सर. विजय सर, यस, ये ट्रांसलेट कितने दिस बजे वर्ड. चालू करने का कॉल करने के लिए सुबह? यस सर. तो कस्टमर के लिए फोन करने के 30 कॉल्स क्या टाइम में चालू करने के? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे? ఎనీ టైం. మిత్రులకు ఏమన్నాడు సార్ అంటే ప్రతిరోజు 30 కాల్స్ మనం మార్నింగ్ 8-9 మన టైం పట్టుకొని రోజు 30 కాల్ చేస్తే మనం ఖచ్చితంగా 90 డేస్ లో ఇండియా అవుతుంది చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే 30 కాల్స్లలో మనకు ఒక్కటి ఇద్దరు దొరికిన అని ఎవ్రీడే 1-2 ప్రాస్పెక్ట్ దొరికితే 30 రోజులు మనకనైతే 60 అవుతాయి. 30 వేసుకుందాం, 30 ఇంటూ 3 నెలలు వేసుకుంటే 90 రోజులు. 90 అంటే ఎంత అవుతుంది? 90 అంటే దాదాపు సివోడ్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క లక్ష వేసుకున్నాను, లేదా 50 వేసుకున్నా కానీ డబుల్ ఎండెట్ అవుతుంది. 30,000 వేసుకున్నా కానీ ఎండెట్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Every time you do it works. Jivan Kartavya is a practical MDRT program. Every person was purchasing for these policies. Every person, because Jivan Kartavya is a best short-term related concepts. Short-term related, but she giving the most powerful return as customer as well as yourself. Jivan Kartavya is a special concept for you start the saving of that policy 273 rupees per day for daily for 16 years, not 15, 16 years. 1 lakh rupees you pay the premium for yearly, only for 16 years. 16 lakh rupees you can invest in LIC. On 16th year, on 16th year, LIC was giving to 4,50,000, and 17th year waiting, and 18th year you get the 4,50,000. How is the process started? 1 lakh rupees you can start. 1 lakh rupees you can start. 1 lakh rupees you can start. Pay for 16 years. Onward of 16th year, LIC was giving to you 4,50,000. 18th year, LIC was giving 4,50,000. 20th year, 21st year, 22 year, 23rd year, and 24th year, LIC was providing 3 lakh rupees. '20th year, 21st year, 22nd year, 23rd year, and 24th year, 3 lakh rupees LIC provide to you. And after that maturity, LIC was providing 14 lakh rupees tax free. When money gives a start,
Money will give the start 16, 18, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24th, 33 lakh rupees, and 25th year, 14 lakh rupees you can provide. It's the most approximately concept. 936.25. This is Raghu sir. I read your queries. I give the answer. Just wait. I read your query. Don't worry. 936.25, 16, 5,20,000 and 948 Bima Shri policy. 20 years is a money back policy. 16 years PPT, 10 lakh rupees sum assured. I give the maturity settlement options. 948 Bima Shri. You pay stop for 16 years. After that, give the payment. One of your customer was high HNI level. He was interested. Because his son is 1 year, either 0 years, 2 years, any years. Uska age 1 saal hai, 0 hai, 1, no problem. He was purchased the policy. His child was going after that 10 years, 10th standard was completing. He's get the 4,50,000 for higher study educations. 11th standard is not required any 11th standard he is completed. 12th standard he was complete. After that 12th standard he is going. जैसे 12th हो जाएगा उसके बाद 13th के लिए या FY के लिए yes, any degree, any level he was getting about that immediately 4,50,000 rupees. After that 1 year gone, 1 साल जाने के बाद 20th year to 24th year every year he was getting 3 lakh rupees. जिसके बच्चे को डॉक्टर बनाने का है, जिसके बच्चे को इंजीनियर बनना है, you want a child for doctor, engineer, MBA, any or criteria, you was purchased the policy. But condition is your child was 0 to 1 year. Because 10th year after you have started, 16 lakh rupees you can invest. ₹16 lakh you can invest. First 2 years, 16 and 18, you will receive your value, 9 lakh rupees. 20, 22, 23, 24, 25th, 24th, 5 years, you can get into 15 lakh rupees. And 24th year, 25th year, he is getting 14 lakh rupees. Jitna investment or refund of money. Itna powerful hai. One of the agent in Chennai, Mr. Suresh, he was selling every year, last 4 years working on that policy. Only for NRI. Only for NRI. NRI के लिए करता है. 18-20 policy करता है. 18 or 20 policies. Every year he is qualifying MDAT. Last 4 years. He was last 4 years my MDAT batch. That time he was started for these projects. आज भी बोलते सर he is most powerful. उनको हिंदी नहीं आता है. लेकिन इंग्लिश में थोड़ा बात कर. He is staying in village. But इतना powerfully 4 years MDAT कर रहा है. और आज फोन करके बोलते सर बहुत मजा आ रहा है काम करने में. What is this meaning of 100 multiple 100? 1000. 10,000. 100 multiple by 100, 10,000. Right? Sum up one question. You ask the customer, sir, 50,000, 50,000, 50,000 premium. Is it possible for right now pay? They say, sir, 15 days का time दो बाद में pay करता है. 1 महीना, 1 month you can wait. Sir, after that pay the start. Sir, 25,000 का policy है. 25,000. Sir, you are interested for 25,000? Sir, they say, नहीं, wait, sir, minimum 1 week, either 2 weeks we can wait. Sir, I give the premium arrangement and I will start the program. Start the policy, right? You can ask the customer, sir, you possible 100 rupees daily can give me? 100 rupees, huh? Not more. 100 rupees you can give me. It's possible for you? Every day, not one day, sir. Every day give me the 100 rupees. It's possible. How many customers you can give the daily 100 rupees? How many customers? कितना लोग देगा आपको दिन का 100 रुपया 100 rupees? How many customers? 100, 200, 300 लोग आपको दे सकता है. Just I ask for you ना. ये ऐसे ही सिंपल सवाल पूछा है मैंने. कितना लोग आपने अगर 100 rupees मांगा तो दे सकता है.
7 customers. सर बहुत लो रेशियो है आपका. और मोर सर ऐसे ही मार्केट में निकला है मैक्सिमम 90 days यू कैन वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट. 90 days में कितना लोग आएगा? 90 days. Venkatrao sir 100 and above. Oh, Balaji sir 50. Oh, not more. सोचने वाला बात है यार. Here, every person you can ask that. Sir, you can policy, you want a policy, you can pay the 100 rupees daily. Sir, you can policy. आपको मालूम है छोटा छोटा चिट फंड चलता है, छोटा छोटा बैंक चलता है, छोटा छोटा small banks. They are collection boy. He was going on the stall. जो शॉपकीपर का स्टॉल में जाएगा, बार्बर है, एनी ऑफ कोई भी मेडिकल शॉप है, एनी ऐसा शॉप पे जाएगा, खड़ा रहेगा, ऐसे ही जाके मशीन रहेगा, उसका हाथ में मशीन रहेगा. वो he was giving the 100 rupees, 50 rupees, 150 rupees, 200 rupees, 300 rupees. वो कलेक्ट करते जाता है एवरी डे, नॉट वन डे, एवरी डे. वो पैसा देगा, ये रिसीट करेगा, इसके हाथ में दे देगा, निकलेगा अगला दुकान, नेक्स्ट शॉप, every time. He was collecting minimum 1 to 2 lakh rupees. You know for that? Minimum 1 to 2 lakh rupees every day, not a one day. Every day he was collecting. His job is only for collection. 100 rupees, 200 rupees, 100 rupees, 200 rupees, 500, 50 rupees, 300 rupees, 400 rupees. He was collecting every day, one of the shops. Karta hai. Why we are not? That's formula is very simple. 100 multiple by 100 is 10,000 and 10,000 multiple by 365, you become MDRT. 36 lakh 50,000 rupees. You can collect the premium in 1 year. You can visit 100 customer. You can ask the 100 customer. So you possible daily for the premium for 100 rupees. Close the 100 customers. 100 rupees daily. You become MDRT. Sir, one up question. Sir, can I go for marketing every day and I collect the 100 rupees every person? Nahi, Baba. You can give the small gulak, you small money bank with him. एक छोटा सा दे दो उसके पास और दे रोज जमा करेगा every month. One of agent in Raipur division, Rajnandgaon branch, 1,500 customers he was closing daily basis. 1,500 customers. He has a qualifying COT. In last 10 years, he is qualifying MDRT, double MDRT. And 1,500 customer he was surveying is a monthly income. Average 6 lakh rupees and above. He was 5 staff only for collection boy. 5 staffs. And daily staff was collecting averagely daily 8 to 10 lakh rupees. करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा. That's why simple. You can start. That's like a provision. That's presentation. Every day policy आएगा. But उसके लिए every day give the presentation. You are on the daily minimum 2,500, 400 rupees. किया है कभी? Daily का 2,400 कमाने का, बात खत्म. If you want to earn 8,000 rupees daily, you become a COT. So you meet me. I will give you the formula. Only for 1 hour, I will give the best to myself. 2 concepts, 3 generation program and जीवन करते हो. How is that? कैसे लगा आपको? अच्छा लगा, बुरा लगा?
because I am talking in Hindi and English mix up, थोड़ा ऊपर नीचे है, but you can understand. अच्छा लगा मुझे. आपके लिए कैसा लगा प्रोग्राम? So, if you're interested with me and my training, so I was joined a physically session in 23rd of June in Hyderabad, Hotel Central Park, Hyderguda, Old MLA Quarters Road. I'm there. Offline session in one day. Morning 10 o'clock we will start. Evening 5 to 7 o'clock we are closing. Best presentation skilling, prospecting, selling, specializations, sites. How to approach for the every customer. कैसा बात करने का, प्रेजेंटेशन का स्टाइल क्या होगा, सर कॉलिंग का स्ट्रेटेजी क्या होता है, सर गुड मॉर्निंग माई सेल्फ विजय कुमार, आई एम कॉलिंग फ्रॉम विथ यू, सर कैन यू इंटरेस्टेड विथ मी फॉर LIC policy, how to approach the 50,000 per month pension for your account, and also you want 1 lakh rupees per month commission, so you can join this program. Don't miss it. Is a family segment, child education concept, retirement planning, Bima school activity, Bima society activity, Bima Parivar activity, how to present, employer-employee scheme, how to present for the companies, how to getting list for the companies. कैसे आप कर सकता है, कंपनी का लिस्ट कैसे आएगा, HNI segments को कैसे अप्रोच करेगा, powerful closing and objection, and you are decide of that day ODC program. Only for I was taking in there 1,666 is cost, including foods, including afternoon lunch, 2-time teas, with I talking in Hindi, English, and compulsory also translation in Telugu. So don't worry. Prasad sir is there, Gangaya sir there, Jakulia Kumaraya sir there. So many people are there. They are understanding the Telugu versions. We are getting 24th of February for last session, and after that 6 months I was coming for the Hyderabad, and next December I was coming in Hyderabad. So you want to join for this Hotel Central Park, 1 MLA Road, Hyderguda, and you book now your seats, already seats limited access, only for 25 seats I taken there, and 15 seats already booked, only 10 seats are available. 9137246631, you can book your seats. And my humble request, you want to complete your MDRT is possible. Srimana sir, you practically was more time consuming maintaining accounts and servicing. You are not a renewal agent. I have told you how to complete your MDRT and COTs. सर Yes, sir. विजय सर, मैं 1 मिनट बोलता हूँ उसको. Yes, sir. Yes, sir. ఇది మనకు లాస్ట్ 6 months బ్యాక్ నేను సార్ది మన ఆఫ్లైన్ సెషన్ అటెండ్ అయినా అండి. చాలా బాగుంటది. ఎందుకంటే ప్రజెంటేషన్ మనం కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది, మరియు మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ అడగచ్చు. జూమ్ మీటింగ్ లా సమయం తీసుకొని తర్వాత అడగాలి కాబట్టి అక్కడ ఆఫ్లైన్ లా మనం వెళ్తే మనకు మార్నింగ్ 10 to ఈవినింగ్ 5 o'clock వరకు ఎక్సలెంట్ సెషన్ అండి. చాలా బాగుంది. నేనే లాస్ట్ ఇయర్ విన్నాను. మనకు చాలా మనకు ఫీడ్బ్యాక్ దొరికితే మనకు ప్రజెంటేషన్ ఎట్లా చేయాలని చెప్తాడు. మరియు కస్టమర్ దగ్గర మనం ఏం అడగాలి, ఎలా అడిగితే మనకు పాలసీ క్లోజ్ అవుతుంది అని చెప్పే విషయం మనం తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. మీరు లాంగ్వేజ్ అని ఇబ్బంది పడకండి. సార్ది ఫిజికల్ మనం చూస్తాం కాబట్టి కనీసం అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉంటుంది. దాని మాట మనకు తెలిసిపోతుంది. అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ప్రజెంటేషన్ మనకు బోర్డు పై ఇస్తాడు, మన లైవ్ లో కనబడుతుంది. మన డౌట్ ఉంటే సార్ ఒకసారి డౌట్ సార్ ప్లీజ్ అని అంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అందులో మనల్ని కూడా ప్రసాద్ సార్ చెప్తాడు, నేను చెప్తాను. కాబట్టి దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. ఎందుకంటే మనకు అన్ని తెలుగులో కావాలంటే మనం హిందీ ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం, మనం ఇంగ్లీష్ ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం. మనకు ప్రాస్పెక్ట్ ఉంటాడు కస్టమర్, మనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అప్పుడు ఏం చేస్తావు, నువ్వు వదులుకోలేం కదా. కాబట్టి మనం లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి.
వ్యాపారం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే మనం ముందుకెళ్ళి ఎండిఆర్టీ సిఓటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కావున ఈ అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకుందాం. మీకు నచ్చితే సెకండ్ టైం కూడా రాగలుగుతారు. ఇప్పుడు జూమ్ మీటింగ్ లో సార్ ఇంతమంది చెప్తున్నట్టే వాస్తవానికి ప్లాన్ కాంబినేషన్ అనేది మనకు ఆఫ్లైన్ మనకు సార్ ప్రింట్ ఇస్తారు మనకు. కాబట్టి దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక్క ప్లాన్ ఒక కస్టమర్ చెప్తే చాలా మంది అట్రాక్ట్ కాకపోవచ్చు. మనం కాంబినేషన్ చేస్తే ఇది బాగుంది కదా, ఇది వెరైటీ ఉంది కదా అని చెప్పి మన కస్టమర్ మన వైపు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. కాబట్టి అది మన ఎల్ఐసి ప్లాన్స్ కొత్తదనం నేర్చుకొని కొత్తదనంగా పబ్లిక్లో వెళ్తే మనం ఎండిఆర్టీ అనేది ఈజీగా అయ్యే అవకాశం ఉంది. కావున ఈ అవకాశాన్ని మన అందరం వెళ్ళి ఉపయోగించుకొని ఎండిఆర్టీ అయ్యి ఈ 25కు వచ్చే వరకు నిలుస్తుందో అని ఈ ఫాస్ట్ సెకండ్ ద్వారా మీకు విజయ కౌమస తరపున నేను తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. Yes, sir. So, thank you, Rangu Bixam, sir. Your payment was received. Book your seat because we are limited. G. Venkateswar Rao, sir. Any queries? One of the queries you can ask me. Which query? जी सर Yes, sir. अभी मैंने ऑफलाइन सेशन में कुछ प्रेजेंटेशन वो प्रिंट दे देगा क्या पेपर? हाँ. Every time दे I देगा ना? was providing. Okay, देने वाला हूँ. Yes. वो बोल दिया भाई, वो प्रेजेंट पेपर मिल के मैंने बोल दिया, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ. Yes, sir. PDF पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह सब मिलता है सर. आपको भी अंडरस्टैंड है. अभी आपका सेशन सुन के सब लोग कितना आदमी आता है ना अपने सेशन में, सब लोग एमडीआरटी करने के 3 महीने में सर, अपना टारगेट 3 महीने में. 90 days you can do it with your MDRT. Yes, I give the challenge. yes sir. ప్రియ మిత్రులకు తెలియజేందంటే 90 రోజుల్లో మన ఎండిఆర్టీ అయితే సెకండ్ మళ్ళీ ఇంకా 90 రోజులు మన టైం ఉంటుంది. జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ డబుల్ ఎండిఆర్టీ అవకాశం ఉన్నది. డబుల్ ఎండిఆర్టీ. కావున ఖచ్చితంగా మనం అందరం అటు చేసి అటెండ్ అయిదాం, మనం నేర్చుకుందాం. ఎవ్రీ వన్ ఎండిఆర్టీ అయి మన సంపదను పెంచుకొని మనం సార్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. కంటిన్యూ. Yes. Sudhakar, sir. बोलो साहब. Yes, sir. Ravindra Badam, sir. Any queries? सब ये उमंग और उत्सव प्लान है ना, दोनों में कौन सा अच्छा रहता, कौन सा कस्टमर को बेनिफिट है? सर, आपने दोनों पूछा. रसगुल्ला अच्छा है क्या गुलाब जामुन अच्छा है? दोनों ऐसा नहीं साहब, उसका अलग फीचर है, इसका अलग फीचर है. Yes, I told you. Jeevan Umang is a lifetime income plan, and Jeevan also lifetime income plan, right? But Jeevan also maximum 80 years you can maturity plan. Not maturity in the sense you can withdraw it anytime. Okay. Jeevan also providing 2 points. One of these 10% of sum assured providing the lifetime, and risk cover is a limited. Risk cover is a limited because अगर आप जीवन आनंद पॉलिसी लेगा या एंडोमेंट पॉलिसी कैन परचेज इज 25 years and that's maturity is 25 lakh rupees आता है, तो 25 years के बाद you can अमाउंट को 25 lakh rupees अमाउंट को you can reinvest in जीवन अक्षय स्कीम रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस. सो जो पेंशन आएगा और जो रिस्क कवर है दैट कॉज ऑफ जीवन ऑल्सो फर्स्ट ऑप्शन. दिस ऑप्शन जो है वो लिमिटेड ऑप्शन है. आपको लगता है कि 10% ऑफ गारंटेड मिल रहा है सम एश्योर्ड का, बट इज अ लिमिटेड ऑप्शंस. व्हाई? रिस्क कवर इज नॉट इंक्रीजिंग. रिस्क कवर इज only for 10% is giving the lifetime. Okay, point number 1. Point number 2, customer was purchasing second option is a 5.5% of compounding. अभी compounding में risk cover नहीं increase हो रहा है, risk cover was same. Risk cover was same, not increasing. So point number 2 is balancing. उसमें एक चीज है 5.5% guaranteed lifetime. If customers get 1 lakh rupees for first year, he was not withdrawing. उसने withdrawal नहीं किया. Next year 1 lakh rupees plus 5.5% उसका add हो गया. Second year not purchasing, getting
विड्रॉल नॉट लिया ही नहीं पेंशन से थर्ड उसका 5.5% कंपाउंडिंग बढ़ते बढ़ते जाएगा. In Indian culture, 99% people, 99% people or client was every year he was withdrawing. Yes. 101% Maximum they will withdraw. withdrawal. Yes. Withdrawal it compulsory. So Jivan Utsav plan is not for the withdrawer. He is giving the optional for the lifetime. Right. If what getting the 5.5% of compounding. अगर करना चाहता है बेटा और बेटी के लिए 35 साल 40 साल के बाद 35-40 इयर्स के बाद उसके बेटा और बेटी के लिए अच्छा मिले तो जीवन उससे अच्छा है. आई क्लियरली ऑन दैट. Okay. जीवन उमंग is providing the 8% guaranteed for the lifetime. Oh. One of the points is there. One of the second point is every year he was increasing the risk cover. Discount. Because 15 saal, 15 years, you pay the 80,000 rupees, 10 lakh rupees, you can get the sum assured. 15 years, you purchase the policy, 80,000 rupees premium for 15 years. How much? 18 years. How much they invested? 16 lakh rupees you can invest it. 15 years. Okay. But second one part, 10 lakh rupees bonus and 15 years bonus, 10 lakh rupees sum assured and 15 years you can get the bonus. Approximately maturity value is death risk cover value is on 15th year 18 to 19 lakh rupees. 18 से 18 to 19 lakh rupees maturity. Okay. 16th year he was started getting the pension for 80,000 rupees SB. Okay. But 16th year is if sub customer was die 15 to 18 to 19 lakh rupees he is nominee what getting. उसका नॉमिनी को 18 से 20 18 to 19 lakh rupees मिल जाएगा. But customer was not die 80,000 he was getting. 17th year he was getting 80,000. But this 18 to 19 lakh rupees increasing every year because of FEB rate was going on high. 15th year LIC was giving FEB rate is 250. 20th year LIC was FEB rate is 450. 25 year LIC FEB rate is 650 either 750. 30th year LIC was FEB rate is 850 either 1150. Till that 100 years its amounts was going on high, every year was increasing. That purpose is amount is increasing for FEB. LIC most of higher FEB rate was providing for you approximately 4,550. Most of powerful. So Utsav and Umang is a different of that simple. Increasing risk cover factor is most important. As per my suggestion. Yes. Why? मैं 70 years में अगर जिंदा रहा 70 years I am not die and I was getting 80,000 rupees. So 70 years my family was surviving to me. Why? ये सोने का पलंग है जो हर साल पैसा बढ़ा रहा है. ये सोने का पलंग है हर साल बढ़ा रहा है. अगर ये 71 में चला गया तो मेरा आगे का नुकसान बहुत ज्यादा होगा. इसके लिए बच्चा 80 साल नहीं 90 साल तक जिंदा रखेगा. बोलेगा तू मेडिकल पे जिंदा रहे. आई क्लियरली बोलता हूँ और क्लियरली ओपन बोलता हूँ मैं कस्टमर को. आई वॉज गिविंग द 100 करोड़ सम एश्योर्ड प्रेजेंटेशन. कस्टमर को बोला 100 करोड़ का 1200 करोड़ आपका बेटी के लिए मिलेगा. बेटे ने जैसे सुना बोला क्या? बोला 100 करोड़ का 1200 करोड़ मिलेगा. बोला पापा को करना क्या है? बोला पापा का एज बोला 49 एज है. बोला राइट नाउ पॉलिसी निकालने का. बोलो करने का ही करने का. बोला पापा कितने साल जिंदा रहेगा? बोला पापा के नाम पे एक पॉलिसी करेगा, तुम्हारे नाम पे एक, तुम्हारा बेटे के नाम पे. बोला क्या होगा उससे? बोला इससे तुम्हारा फैमिली में 1500 करोड़ का प्रोविजन तैयार होगा. ही इज कैलकुलेटिंग. लास्ट 3 months बिफोर आई वाज गिविंग द प्रेजेंटेशन उसको सोचने पे मजबूर किया मैंने. आप यकीन नहीं कर सकता इतना पावर जीवन उमंग में है. Yes. लिए क्या लगता है मालूम है? दिखने के लिए लगता है कि जीवन उमंग 8% देता है. अगर आप कैलकुलेट कर लो जीवन उमंग को पूरा डीपली, जीवन उमंग was giving 16% return rate of 16th year
16th year, 16वें साल पे 16th year, 17th year he was increasing interest rate every year. He was getting increasing till that 100 years. Jeevan Umang was providing approximately 100% return of this policy. इतना 100% का रेशियो है इसका. You can calculate the presentation. और वही चीज मैं लेने वाला हूँ 23rd में. कैसे बढ़ेगा उसका कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा. If you are interested, everyone, join. Most of powerful presentation. बात कैसे करना? 7 times insurance, how to talk. Couple insurance, how to talk. More of information. बीमा स्कूल कैसे कर सकता है? बीमा सोसाइटी में कैसे घुसने का है? सेक्रेटरी से क्या बात करेगा? कैसे उसको बात करके मला सकता है? इतना पावरफुल मैं लेने वाला हूँ. बाकी इच्छा आपका है. आप सोच लो, विजय कुमार वॉज टॉकिंग इन ओनली फॉर आपके साथ सिर्फ ऑनलाइन पे 1 घंटा है. सोचो पूरा दिन आपके साथ रहेगा तो कितना बैटरी चार्ज होगा. बहुत अच्छे रहते सर, बहुत अच्छे रहते सर. तो उमंग सर, का सर, डेफिनेटली दे रहे हैं ना सब, उमंग का दे रहे हैं ना उस दिन. उमंग भी है, उत्सव भी है, इंडेक्स प्लस भी है, अमृत पाल भी है. बहुत ले रहा हूं मैं सर. उस दिन पूरा दिन है मेरे साथ. विजय सर, यस सर, विजय सर, विजय सर, यस सर. मैं 1 मिनट मेरे एक्सपीरियंस आज का मैं बोल सकते हैं क्या? मेरे एक्सपीरियंस आज का यस यस एक डॉक्टर डेफिनेटली मिला. सर. यस सर, यस सर. मैं आज एक डॉक्टर के पास गया सर, उसका उम्र 61 सर. यस सर. उसको मैं बोला आपका मैडम कितना साल है? लगेगा तो 54. उसको मैं 50 लाख का सम्मेशन जीवन उमंग बोलते सर. बहुत परसेंट घर इतना अच्छा है क्या? उतना अच्छा तो 100 साल में पैसा मिलेगा. उसका आधार कार्ड दिखाओ बोले तो मैं उसका उम्र 56 हो गया. अपने उमंग के कितने साल? 55 है ना? हाँ हाँ. मैं बोल दिया अभी देखो सर, मेरे कितना लगे आपको? इतना अच्छा लगे ना? अभी तुम 1 करोड़ प्रीमियम दे दो, मैं नहीं लेगा, एलएस नहीं लेगा बोला मैं. ऐसा कैसा नहीं लेगा? तो उम्र को खत्म हो गया. अभी देखो एक चांस आपको एलएस दे रहे हैं आपको. एक अच्छा प्लान है, सेम पेंशन है. जीवन उत्सव बोलते सर, जीवन उत्सव कर लो, जिंदगी पेंशन मिलेगा. लेकिन मरने के बाद ज्यादा पैसे नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा. तुम फैमिली दे दो गिफ्ट बोला मैं. बोले सर वो मंडे दिन आ जाओ लेके जाओ बोला मेरे सर. अपॉइंटमेंट दे ओहो, दिया. थैंक सर यू. उमंग पेंशन है, यस. उत्सव पेंशन है, लेकिन उमंग में फिफ्टे लिमिटेड है. उत्सव तो टाइम मिलेगा ना. पहले वो बोलने के, नहीं तो वो बोलने के बस. यस. 1 or 2 और अच्छे खत्म. As తెలుగులో per my suggestion, చెప్తాను. Utsav is very powerful. Umang is very powerful. सर अभी And तेलुगु one बोलने of के the क्या सर? हाँ, तेलुगु 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 translate, बोले क्या? तेलुगु translate. తెలుగులో చెప్పవా గంగయ్య? हाँ सर सुधाकर सर చెప్పన్నా. తెలుగులో నేను ఇవాళ ఒక మాట్లాడింది కదా సార్కు తెలుగు కూడా అర్థమవుతుంది. నువ్వు తెలుగులో చెప్తే సార్ మిగతా సార్ వాళ్ళకి నేను కావాలి. చెప్తున్నాను సార్. నేను ఒక టైపింగ్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్. నేను అయిపోయింది కదా. సార్ సుధాకర్ ఆ, సార్, ఆ, నేను ఈ రోజు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్. నేను పోయి కూర్చున్నాక అంత మాట్లాడుతుంటే సార్, మంచి సార్ మీరు డాక్టర్ కాబట్టి మీకు పెన్షన్ ఉండదు కదా సార్, మీరు ఏజ్ పెద్ద అయింది కదా సార్, ఒక పెన్షన్ ప్లాన్ తీసుకోండి. ఎంత వస్తా చెప్పాడు. మీరు ఎంత కడితే అంత వస్తా అని చెప్పాను. ఒక 5 lakhs ప్లాన్ చెప్పాను సార్ అతనికి. చెప్పాక సరే అంతమంది ప్రజలను చూపించినాక చాలా బాగుందని చెప్పాను. సార్ మీ మేడం ఏజ్ ఎంత చెప్పాను. 54 ఉంటాడు. చెప్పిన అన్ని ఉంచినాక అతను అంటే ఆధార్ కార్డు ఉంచాను. గంగయ్య గారు 56 ఉంది అన్నాడు. ఒకటే చెప్పిన సార్ మీ మేడం 56, మీది 61. మీరు ₹1,00,00,000 ప్రీమియం కడతాను ఇప్పటికి మీకు ఎల్ఐసి రిజెక్ట్ చేసి మీకు ఇవ్వని చెప్పాను సార్. అట్టెట్లా అన్నాడు. జస్ట్ ఒక టైం లిమిట్ ఉంది సార్, ఆ లిమిట్ తర్వాత మీరు 10 కోట్ల తర్వాత మేము తీసుకోండి సార్ ఎల్ఐసి, అదే పవర్ఫుల్ అని చెప్పాను. మరి ఎట్లా అన్నాడు. జస్ట్ ఇంకొక అవకాశం మీకోసం స్పెషల్ గా ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా మీలాంటి కోసమే ఏర్పడేసింది, ఇంకో ప్లాన్ చెప్పాను. చెప్పు అన్నాడు. అన్నంగానే నేను చెప్పిన సార్ మీరు 5, 6, 7, 8, 9, 10 మీ ఏజ్ పెద్ద కాబట్టి ఒక 7 సంవత్సరాలు కట్టండి సార్. 10th year నుంచి మీరు లైఫ్ టైం పెన్షన్ తీసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకోటి సార్, ఒక్క మాట అడుగుతాను మీరు ఏమనుకోకండి, ఇది చెప్పు అన్నాడు. సార్ ఏ మనిషి అయినా డాక్టర్ అని యాక్టర్ ఎప్పుడైనా కానీ సార్ 80, 90, 100 పోడే కదా సార్ అన్న. పోడాను. మరి పోయేటప్పుడు మీరు ఉట్టి చేతులతో పోతారా?
నీ కుటుంబానికి ఏమన్నా జల్సా ఎంజాయ్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఇచ్చిపోతారన్న అవి ఇచ్చిపోవాలన్నాడు. ఇచ్చిపోవాలండి సార్, ఇది ప్లాన్ చేసుకోండి సార్. మీరు ఎప్పుడు అయినా మిమ్మల్ని పూలలు మంచిగా అప్పుడు చనిపోయినాక సార్, చనిపోయినాక బోరుపాలు చల్లుతారు కదా సార్, పైసలు మీద పూలు చల్లుతారు, ఎందుకంటే డబ్బులు ఇచ్చిపోతారు కదా. ఆనందంగా సాగనందరూ చెప్పన్న అనగానే వండర్ అయిపోయింది సార్. అయ్యి బాబు నువ్వు మండరా, తీసుకెళ్ళు, ఇస్తా అని చెప్పాను సార్. సుధాకర్ సార్ రైట్ అయిపోయింది, నంబర్ చేసుకున్నాడా? ఇలా చెప్పిన డైరెక్ట్ ఇలాగే చెప్పిన, చెప్తే మండేరా అన్నట్టు సార్ మండే ఇస్తాను సార్. ఎందుకంటే పెన్షన్ అనేది చాలా మందికి ఎవ్వరికి అవసరం సార్. ఎంత సంపాదించిన పెన్షన్ అవసరమే. పెన్షన్ తో సహా మనకు లైఫ్ కవర్ కూడా అవసరం కదా సార్. లైఫ్ కవర్ కావాలంటే డబ్బులు కట్టు. ఓకే ఓకే సరే కదా, టైం బాగానే అయింది చేస్తాం. ఇలా చెప్పాను సార్, చెప్తే యాక్సెప్ట్ సార్. सर विजय कुमार सर, वो संडे के दिन कब स्टार्ट होता है प्रोग्राम? 10 बजे, 10 10 बजे। o'clock morning. 10 बजे। ओके ओके। मैं सोच तुम कैसा आना, क्या करना। Yes, sir. సుధాకర్ సార్ Yes, Bhaskar sir is right now మీరు here. రావాలి. Yes, Bhaskar sir. Yes, Bhaskar sir. Yes, Bhaskar sir. Sir, namaste, sir. Namaste, sir. Ji. Namaste, sir. How are you, sir? Very fine, sir. Excellent, sir. Your Yes. session is also excellent, sir. Super. Thank you, sir. You are joining the program now? I will tell you tomorrow, sir. No problem. Prasad sir Maximum is I will also try joining. to- Yes, sir. Yes, I know, sir. Vocal, sir. So, कितने आदमी हो गए सब? अभी तक कितने आदमी हो गए? 15 है 15। 15। मैं लिमिटेड लेता हूँ सर, 25 सीट लूंगा, ज्यादा नहीं। సార్ సుధాకర్ గారు లాస్ట్ టైం సెషన్ ఫిబ్రవరిలో పెట్టారు సార్, జనవరి ఫిబ్రవరిలో. చాలా బాగుంది సార్. కాదు ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగు కొంచెం బాగా అర్థమైతే చాలా బాగుంటది తెలుగులోకి. మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. అంతే అంతే, అవును సార్. కొద్దిగా బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సార్. సార్ గారి సెషన్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినందుకు మీకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు సార్. హలో. థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, థ్యాంక్ sir. యూ వెరీ మచ్ సార్. कुमार है Sir, सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर सेशन बहुत अच्छा है सर। Thank I you. will also come to Sunday sir। I am बात करते हैं सर प्रसाद सर तो। Yes, last time you are joining the program, no? That's 24th Yes. of February. Yes sir excellent sir। Okay. आपका एक्सपीरियंस sir. कैसा था? बहुत अच्छा है सर। I understand for your language sir, and also plan presentation also बहुत excellent sir। But not Hindi language, not understanding people also understanding sir। Why? Okay. Because your language is very simple sir, not hard। Any translation gives to Prasad sir। Already we have one of the most experienced person, and Gangai sir also। we feel very happy। sir thank you sir। వస్తున్నావా? సార్ మీరు వస్తే నేను వస్తా సార్। నేను రెడీ. మీరు రెడీ అంటే నేను రెడీ సార్। గురువు రెడీ సార్, గురువుడు రెడీగా ఉన్నప్పుడు వెనక ఉన్న శిష్యుడు రెడీగా ఉంటాడు। ఓకే చెప్పేసా సార్ సార్ చెప్పాయి. చెప్పేస్తా ఆల్రెడీ మెసేజ్ పెట్టిన సార్కి। ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఈ మీటింగ్ లో కూడా చెప్పేస్తున్నా। కంపల్సరీ సార్, మీరు ఉన్నప్పుడు నేను కంపల్సరీ వస్తాను సార్, ష్యూర్। సార్ ఆల్రెడీ మండే మాకు ఒక మీటింగ్ ఉంది సార్, ఎండిఆర్టీ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎండిఆర్టీ వాళ్ళది హైదరాబాద్ లో। ఓకే ఓకే నేను సండే వస్తే 2 కంప్లీట్ అవుతాయి కదా సార్ ఎట్లా? సరే నేను ఎప్పటి మండే నుంచి నాతో రూమ్ లో ఉండాలని ఆలోచిస్తున్నావు కదా? ఎస్ రూమ్ లో ఉన్నావు ఈసారి. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, ఎగ్జాక్ట్లీ। సరే థ్యాంక్ యూ సార్। विजय नहीं बोलता हूँ सर, सर, मैं पेमेंट अगर आए तो मैं उधर ही पेमेंट कर सकते हैं ना, अगर आए तो? हाँ, कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे एक्सेस बताना पड़ता है सर। हाँ वही बोलना पड़ता है। यस, Sure. वेंकटेश्वर राव सर। सर विजय सर, थैंक यू सर, आई विल कम। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर। प्रसाद सर आपका भी कंफर्म है ना?
Yes, sir. 100%, sir. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Because employer scheme projections का पूरा Yeah, देख deeply लिया, sir. मैंने discussion. Sir, I want Bima School, sir. Yes, Deputy Bima School, Bima Society, Bima Yes. Parivar, Bima Gram, and also employer schemes. We also discuss on that 2 hours minimum. Yes, sir. Why? Pura Because I am projection private letters, degree lecturer, everything है ना, is sir? ready. Oh, thank you, sir. I surely I want a Bima School, sir. Yes, definitely, sir. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. मेरे को 8 बजे आ जाओ बोले थे ना सर आपने. आप कल बात करता हूँ मॉर्निंग में. ओके थैंक्स. ओके सर, बाय. मेरे तो केमरी उमंग सर. में तो प्लान का डिफरेंस कौन सा किसको देना उसके बारे में सोच रहे हैं. वो पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. विजय हम लोग आएंगे वहाँ पे. और एक सेशन उमंग और उत्सव के ऊपर लगते हैं. कब? पूरा डीपली उमंग और उत्सव. और दूसरा उमंग क्या है, उत्सव क्या है, पूरा कस्टमर अप्रोचिंग कैलकुलेशन. हाँ, वही संडे का दिन नहीं, संडे का दिन संडे नहीं है. हाँ, संडे नहीं है. नेक्स्ट सेशन वी आर अटेंडिंग एक 10 days के बाद. 10 days के बाद. हाँ, 10 days के बाद एक स्पेशली उसके ऊपर रखते हैं. उधर ऑफलाइन सेक्शन है ना सब. वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन रखेंगे आपके लिए. एमडीआरटी ये ग्रुप के लिए रखेंगे स्पेशली. ओनली उमंग एंड उत्सव. ओके. केमडी सर. सर. यस सर. हाँ सर, पेमेंट कर दिया सर. स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए. थैंक यू सर. ओके सर. यस. वेंकटेश्वर राव सर. वेंकटेश्वर राव सर. जीबी वेंकटेश्वर राव सर. Sir, good evening, sir. Yes sir. I am from Vijayawada, sir. Yes sir. So actually, on that day, I have another program. So just today, my wife told me. So actually, I want to attend that training, but unfortunately, I'm having another program. Sir. Next time I will join. Sir. No problem sir. Thank you very much. Thank you sir. So thank you very much to all of you. Can we close the project? Today's session we can close. Take this screenshot and take these posters. BRD Naik sir. Okay, just wait. Yes sir, Naik sir. Any queries? सर ये Yes. वही नंबर को व्हाट्सएप करना, वही नंबर को जीपे करना. हाँ, वही नंबर पे पेमेंट करना सर. वही नंबर को ही व्हाट्सएप करना है ना. नीचे Yes, और एक yes, नंबर yes. है, उसको करना व्हाट्सएप. नहीं, वही नंबर है, सेम ही नंबर है सर. 9137246631. ठीक है Okay, सर. thank you sir. Yes. रंगू बिक्सम सर, प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा. Any others? So thank you very much to all of you for joining today's. I close the program. Next time we are attending specially Jivan Umang and Jivan Utsav session. 1+. Okay, just wait. Yes, 1+, sir. 1+ MT2 111. So, thank you to all of you. I close the program right now. Sir, can close? Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much to all of you and FastTrack MDRT group members. So give me opportunity for presenting some things. Next time we are giving most and more powerful, and possibility I was giving the Telugu translation. Small words I can use in नहीं Telugu. साहब, सब लोग समझता मगर बोल नहीं सकते. Yes, yes. Thank you, वो sir. प्रॉब्लम है. Yes. I close the session. Okay. Okay. Thank you.